Hi all, welcome to Odisha Civils. Mountains, जदि हमें देखिबा कि mountains are really a जदि देखिबा geomorphological process रे mountains have created. It has deep rooted link with your geomorphological process. बर्तमान जदि हमें देखिबा कि mountains topics is a very interesting topic. Types of mountains हमें आज जानिबा कि mountains कौन types of mountains केमती हेता है, means how there are different type of origin जदि हमें देखिबा कि mountain building जोटा कुहा जाय orogeny, right? or orographic जदि हमें देखिबा कि geological word it is an orographic. So types of mountain, it's a very interesting topic जोटा कि हमर जेमती तुमर ज्योग्राफी ऑप्शनल सो जीएस हो सबुतरे तुमको हेल्प हो. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानिबा उपरे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स उपरे प्रथम जानिया पूर्व फर्स्ट लेट अस नो what do we mean by the mountains माने कोन. लेट्स नो that what do we mean by the mountains की कहि परि. what do we mean by the mountains माने कोन हमें कहि परियो. what do we mean by the mountains की कहि परियो. can you say different types of mountains of a range thae. can you say the mountains or range thae. normally mountains they are the जदि हमें देखिबा they are the elevated portions. okay, elevated portion having कौन इसमें खाली तो elevation होबनी, having pointed है ना your pointed cliff, steep slope. okay, steep slope माने slope टा steep slopes माने तीखा थिबो steep slopes and they are narrow. normally जदि हमें देखिबा mountains रो range टा जदि कोनसी any elevated form if it is more than जदि हमें जदि इंटरव्यू में तुमको पचराबे just say if it is more than, right, if it is more than 1800 or above then it is known as your mountain. जदि 1800 मीटर ऊपर को रहबो then it is known as your mountain. सेमती hill जदि कोन कहबा hill is a small type, right? hill is a small type. This is your mountain, let's say, and this is your hill, right? this is your hill. sorry, hill जदि देखिबा छोटा आकार, this is a hill. hill रे जनरली कोन था डेफिनेशन सेम जिंस एलिवेटेड बट तारा रेंजेस हला 600 to 700 मीटर. बहुत बहुत अलग अलग प्रकार देता है बट नॉर्मली we'll go for an average that is 600 to 700 meter, normally known as an hill. so mountain हमें जानले कौन से गोटे elevated portions को हमें कहबा, we can say this as a mountain हैला. रादर ता परे देखिबा mountains विषय यदि हमें जानिबा, mountains have segregated according to the geological origin. जदि बहुत गुड जगह देखा है कि mountains they have been segregated as per the geological origin. वर्तमान जदि mountains हमें देखिबा, right, mountains are कौन कौन types रे. number 1 जदि हमें देखिबा कि it is your fold mountain, then next it is your block mountain. fold mountain कला, then block mountain, then it is your dome, volcanic and relic mountain. one by one जानिबा. बहुत interesting to know about all the details of types of mountains. तार ऊपर भी आहुरी बहुत सारा डायग्राम्स करके मुझे हमें जानिबा ई जिंसटा. normally fold mountain कौन, fold something is like this one, like fold किसी जिंस जेंति तमे fold करूचो, it is like that one, right? it is just like that, something is fold like this one, right? something is fold, this is, right, this is called your fold mountain. normally it तमे देखुचो mountain हैला fold ही की अछि, this is just like an fold जेमति दी फोटो की केमति की चापी देकी. normally what happens हमें एटा डिस्कस करबा आगु को. basically fold mountains केमति हेतन, they are the result of collision of the tectonic plate. when there is a collision of the tectonic plates, right, crumpling of the crust and having sedimentary origins. आर बुझो very deep meaning हैला. जदि हमें देखिबा these are the tectonic plates माने जेमति मु कहबी कि the creation Himalaya is a fold mountain, right? Himalaya is a fold mountain and Himalaya केमति हेतला, the formation of the Himalayas is because of the Eurasian plate. एठी आसीतला Asian plate or Eurasian plate हैला. Eurasian plate, Asia plus एठी देखिबो Eurasian plate, right? Eurasian plate आउ एपडी की आसला Indian plate, Indo-Australian plate, right? Indo-Australian plate एमान जेतले बाडा बडी हेले कोलाइड कले Indo-Australian plate. when these two plates collides with each other, when these two plates collide with each other,
your Himalayas have formed. Himalayas, we know Himalayas are the basically the fold mountain, right? Himalayas are the fold mountain. So normally it called like they're the result of collision of the tectonic plates, right? Fold mountain created and the types of mountain portion, crumbling of the crust having sedimentary origin. जदि आम ये डायग्राम टाको देखिबा तुमको आहुरी भी इजी रहइबो कि नॉर्मली एटी कोन दिखाइ तुम देखछो किछ गोटे सेडिमेंटरी माने कादो टाइप रे एरोजन हला हे कि जो आछे it when your sedimentary origin that mainly your materials comes from your igneous rock and the metamorphic rock, and it is get deposited in the ocean basin or the river basin. Through the passage of time they get folded. Normally एटी कोन होची, this is your एटी जदि देखिबो this is normally ए जगह रे this is your folding occurs or compressional force, right? This is your compressional force. Normally this is your compressional force. Compressional force padi ki haba dipotu compressional force is there, right? So compressional force jodi padla dipotu, so what happens? Compressional force padle, compressional force padle eta squeeze haba, right? And folding occurs. एटी तमे देखुछो एटी लिखा जोटे जगह एंटीक्लाइन आउ सिंक्लाइन. एटी बुझो एंटीक्लाइन कोटा को कहंती जोटा को माने ऊपर पर्सन टाको एंटीक्लाइन कहंती, माने एटीसिस हला एई जो पर्सन टाको जोटा उठी के अछि ताको कहंती एंटीक्लाइन और क्रेस्ट जोटा कि ढेउरे कहंती. एटा को कोन कहंती? दिस इज योर सिंक्लाइन हला सिंक्लाइन और ट्रफ हला. बेले बेले आपको कोन कहंती एटा भी हमें कहि परिबा. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वेक्स हला. कन्वेक्स भी हमें कहि परिबा हला. लेंस ऊपर जोटा हमें यूज करू आ एटा हला कनकेव and this one is your concave. हला मन रख परीक्षा रे जिंस very fundamental. I am telling only the fundamental things, right? Now let's know about the fold examples of the fold mountains. Fold mountains जदि देखियो, fold mountains are greater in length and very much narrow in their width. Normally जदि तमे देखियो कि एटी जो माउंटेन टा मु कल्ली हला आउटे पूर्वरु they are very greater in your length, माने हाइट संग बहुत बड़ था but narrow. Then normally माने narrow था, right? They are very narrow. As you saw here, like the mountain system like your Himalayas हला कि हमें कहबा कि माउंटेन सिस्टम लाइक हिमालयस माने लंबा थांती, हाइट रे बहुत लंबा थांती बट विड्थ माने चौड़ा रे तांकर बहुत कम था. लाइक योर हिमालयस, एंडीज, एल्प्स हला एल्प्स माउंटेन, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड अटलास माउंटेन. अटलास माउंटेन टा तुमको गोटे क्वेश्चंस देली असाइनमेंट. अटलास माउंटेन टा कोठी देखा जाय वर्ल्ड रे पृथ्वी रे को जगह रे अटलास माउंटेन फाउंड. मोर मेसेज बॉक्स रे ठीक अछि जो माने देखुछो YouTube रे हला, जो माने इंटरेस्टिंग सीरियस कैंडिडेट और जो माने निजर नॉलेज प्रूव करिया को चाहछो डेफिनेटली मोर कमेंट बॉक्स रे YouTube रे निश्चित रूपे एटा तमे मते तुम गुडा असाइनमेंट दिली करी. अटलास माउंटेन टा कोठी देखा जाय, वेयर इट इज फाउंड अटलास माउंटेन. देन तुम लिखली एंडीज इन साउथ अमेरिका, राइट? एंडीज इन साउथ अमेरिका मु लिखली एंड अटलास इज इन नॉर्थ अमेरिका. सेमते अटलास सॉरी योर एल्प्स रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका. एल्प्स तुमको दीटा असाइनमेंट दिली, एल्प्स टा कोठी देखा जाय और अटलास माउंटेन कोठी देखा जाय हला. जेमते हमें जानिले कि एंडीज हला साउथ अमेरिका, रॉकीज हला नॉर्थ अमेरिका. सेमती तमे कमेंट बॉक्स रे मते एटा जणाइबो एल्प्स माउंटेन पृथ्वी रे कोठी देखा जाय एंड वेयर इट हैज फाउंड एंड सो आल्सो द एटलास माउंटेन, राइट? बर्तन आगु पडिबे. नॉर्मली फोल्ड माउंटेन दी प्रकार थाए. नॉर्मली इफ यू सी फोल्ड माउंटेन्स आर टू वेराइटीज, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन हला. एटा लेखिनियो एबरा सब जो माने करूछो डायग्राम आउसु नै के आसो. Fold mountains generally are two types. One is your young fold mountain, right? Young fold mountain, and another is your old fold mountain, right? Old fold mountain. दी प्रकार था है young fold और old fold mountain. So young fold रे को माने जदि जियोलॉजिकली जो माने अभी very recent time region. For examples यार की example जेमति हिमालयस दबा. This is the examples of your Himalayas, right? Himalayas are known to be the young fold mountain, where you the old fold mountain, your example is your Aravalli, right? Aravalli mountain. Aravalli is a बहुत बड़ा. Aravalli जो तुम देखो it is traced back to your near about 3.5 to 4 billion years ago. माने 3500 रु 4000 million years जोटा कि जब बिलियन करबी that is only हला 10 to the power 9. इटा मिलियन हला 10 to the power 6, right?
सो ये आम जाने हिमालयस एंड द फोल्ड माउंटेन्स दुई प्रकार यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन नंबर किए आसीबो अरावली आसीबो विंध्यास आसीबो हैला एठी हमर हिमालयस आसीला आउ के आसीला आउ एंडीज माउंटेन आसीबो यंग फोल्ड एंडीज माउंटेन इन साउथ अमेरिका राइट ओके अच्छा आगु बढ़िया ये तो गोटे प्रकार गला ये कवर कले कौन कि वी हैव कवर्ड दिस फोल्ड माउंटेन्स कवर कले हमें जानले फोल्ड माउंटेन हैला बेसिकली दी प्रकार थांती यंग फोल्ड माउंटेन ओल्ड फोल्ड माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयस आसीबो एंडीज माउंटेन इन योर साउथ अमेरिका बट जदि हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन देखो इट इज योर अरावली एंड विंध्यास इन इंडिया नाउ कम टू द ब्लॉक माउंटेन जानिबा ब्लॉक माउंटेन बेसिकली जदि देखिबा एटी तमे कोन देखुछो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डायग्राम रे ब्लॉक माउंटेन जदि तमे देखुछो this is one there is a fault generated देखुछो these are the fault line it देखो this is the fault line right this is your fault line right you saw here this is your fault line right so normally कौन हुए जितने अर्थ क्रस्ट रे सरफेस रे मूवमेंट हुए हैला नॉर्मली गोटे पार्ट कौन हुए फॉल्ट रो ऊपर को पड़े आसे उठी जाए ऊपर को उठी जाए देयर इज एन नो क्रस्टल डिसलोकेशन कहते लेट अस नो दिस वन the block mountains basically are formed when the faults in the earth crust हैला faults normal fault जो था faults in the earth crust displaces large blocks of rock upwards बहुत बड़ा large block को upward से करे right thus creating block mountains or host normally it creates block mountains or host example की थर्ड ये 80 बुझेला कौन है formed when the faults in the earth crust fault normal केंति थे म आगुर भी बहुत सारा क्लास रे कहिछि हैला कि fault गोटे प्लेट थियो गोटे सडन गोटे फोर्स आसीबो तो नॉर्मली कोन हो इट डिस्प्लेस करियो माने घुंचेई दबो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक अपवर्ड को उठे दो thus creating a block mountain or host just look at here एटी नॉर्मल गोटे प्लेट थिला बहुत बड़ो एटी गोटे क्रस्ट आसीला सो व्हाट हैपेंस ए परसेंट तमे देखियो ऊपर को उठी गला राइट एटी जदि तमे देखियो माने एटी गोटे फोर्स आसीला ए पार्ट रे सो ए पार्ट रे कोन हला कि ऊपर को उठी गला जस्ट लुक एट हियर आउ जोटा ऊपर को उठी गला तलटा निश्चय दबी जीवो सो दैट इज व्हाट दिस इज फोर्स फ्रॉम बीनेथ हैला फोर्स फ्रॉम बीनेथ माने तळु फोर्स फ्रॉम बीनेथ सो जोटा ऊपर को उठी गला दैट इज कॉल्ड नथिंग बट दिस इज द ब्लॉक माउंटेन एटी देखो ब्लॉक माउंटेन एंड दिस इज योर ब्लॉक माउंटेन हैला और जोटा दबी गला सेटा कहंती ग्राबेन और रिफ्ट वैली एटी देखो दिस इज ग्राबेन और रिफ्ट वैली भी आपको कहंती अफ्रीकन रिफ्ट वैली विंध्या सतपुरा रो रिफ्ट हैला सतपुरा मझरे नर्मदा रिफ्ट वैली दिस इज हमें कहि परबा दिस आर द क्लियर कट एक्सप्लेनेशंस फॉर दैट सपोर्टिंग द ब्लॉक माउंटेन्स एंड द रिफ्ट वैली हैला बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे एगुडा सब पचार जंदी हैला म तुमको आज देखै देबी प्रीलिम्स रे भी केमती टाइप रो क्वेश्चन हमने पचार जंदी यारी भीतर राइट सो एटा हम जानले सो एग्जांपल के सियरा नेवाडा यूएस रे की अछि सियरा नेवाडा यूएस रे देन सतपुरा एंड विंध्यास एमानी वैसे ब्लॉक माउंटेन कैटेगरी गोटे टाइम रे कोन हेतला कि विंध्या सतपुरा ऊपर को उठी जाइतले राइट देन ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी रे ब्लैक फॉरेस्ट देखो एटा तमरा आस्तिला ओसीएस प्रीलिम्स हैला ओसीएस प्रीलिम्स रे आस्तिला केते ओसीएस 20 रे आस्तिला एटा 20 और 21 रे क्वेश्चन आस्तिला प्रीलिम्स रे ए क्वेश्चन ऑलरेडी पचारि सरछन ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी comes under which category of mountain so answer is your block mountain हैला आंसर हो सो एगुडा सब जानि के रख दिस शुड बी वेरी हेल्पफुल हैला तमर जदि देखिबो कि हेल्पफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग राइट सियरा नेवाडा कोटी सियरा नेवाडा यूएस रे जदि देखिबो समस्त मोर संग अच्छो सियरा नेवाडा जस्ट लुक एट हियर जस्ट ओपन नॉर्थ अमेरिका जतले पढुछो हैला एटलास खोली के देखिबो नॉर्थ अमेरिका एटी देखो दिस इज सियरा नेवाडा दिस इज नॉर्थ अमेरिका सियरा नेवाडा एटी देखो दिस इज सियरा नेवाडा दिस इज राइट सियरा नेवाडा दिस इज माने जदि तमे देखिबो कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ओरिगन रे आछे राइट ओके नेक्स्ट फर्दर आगु बढ़िबा दिस इज द ब्लॉक माउंटेन नेक्स्ट कम टू द डोम माउंटेन को डोम वाट रो जणा पड़छि कि समथिंग लाइक जेमति गोटे गोटे गंबुज टाइप रो थिबो समथिंग लाइक डोम दिस इज हमें कहि परबो दिस इज योर डोम टाइप लाइक डोम
किसी तो अर्थ रे हेइथिबो that the repercussion is that कि डोम माउंटेन फॉर्म ହେଇଛି नॉर्मली डोम माउंटेन कोन हुए magma तळु जतले बाहरे magma जतले बाहरे magma बाहरी कोन हो without dislocating the earth crust it getting upward एमती भी geological formation डायग्राम रे देखि परिबा डायग्राम रे एटा क्लियर है डोम माउंटेन जस्ट लुक एट द डोम माउंटेन हियर राइट एटी तमे कोन देखुचो कि this is dome mountain magma देखो this is your magma chamber magma is beneath here this is your magma right magma is coming earth जदि तमे देखुचो magma कोडी अछि asthenosphere हला asthenosphere हमें जानि चंदी asthenosphere जो magma अछि से कोन करे ऊपर को आसीबो when it comes हला upward it accumulate here this is accumulate here this is your magma and it accumulates here magma right magma accumulates here ei jaga तो ये कौन हो विदाउट मन रख विदाउट डिसलोकेटिंग और हैमिंग द अर्थ रो सरफेस और अर्थ रो क्रस्ट को बिना हार्म रे और बिना ब्रेकिंग करके और डिसलोकेट करके एटा फॉर्म होछ हला दैट इज कॉल्ड योर डोम माउंटेन सो नॉर्मली एटा बल्ज हे की थाए जदि हमें देखिबा एक्सप्लेनेशंस it is found that sometimes the earth crust does not break into block normally कौन होता है earth crust does not break into block हे नथाय but it rises upward normally it कौन होता है rises upward as a result of the earth movement हैला as a result of the earth movement right actually these are the magma normally जब हम देखबा actually these are the magma that pushes upward हैला normally it pushes upward without breaking the surface हैला बिना ब्रेक करके surface रे without breaking the surface creating a rounded bulge हैला just एटी देखो this is a rounded bulge ठीक अछि this is your bulging this we can say the bulging माने हैला पेट जल्दी खुले से बड़ा जल्दी खुली that is called rounded bulge it लिखले pushes upwards magma pushes upward without breaking the surface बिना surface को break करी की से ऊपर को उठी जाए एग्जांपल देबा हेनरी माउंटेन्स इन यूएसए को जगह रे अछि उटा स्टेट रे उटा हेनरी माउंटेन एटा मन रखियो एटा एग्जांपल परीक्षा रे पक्के पचारि पारंती उटा इज ए उटा स्टेट इन यूएस रो जो उटा स्टेट अछि सेही जगह रे तमरा हेनरी माउंटेन इज देयर राइट हेनरी माउंटेन जोटा कि नॉर्मली इट्स एन एग्जांपल्स ऑफ योर डोम माउंटेन सो एठी हमें कोन कवर करले सो जानले एठी हमें कि डोम माउंटेन हैला नेक्स्ट ता पूर्व हमें जानले कि योर फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन डोम माउंटेन ये तीनटा हमें कवर करले फोल्ड योर ब्लॉक एंड द डोम माउंटेन नेक्स्ट जदि हमें देखबा कि वोल्केनिक माउंटेन हैला वोल्केनिक माउंटेन केमते सो लेट अस नो वोल्केनिक माउंटेन नॉर्मली वोल्केनिक माउंटेन जदि हमें देखबा कि volcanic mountain are the depositions normally जदि हम देखबा कि volcanic mountain they are the deposition of lava they formed due to the deposition of lava हैला they formed due to accumulation or deposition of lava जितने deposit हेता जेतबे तमरा basically your volcanic mountains have produced world रे बहुत जगह अछि जति volcanic mountains they have formed like this one in this way for one normally example हम देखबा volcanic mountains formed when molten rocks हैला जदि हम देखबा कि when the molten rocks deep inside the earth हैला deep inside जदि हम देखबा molten rocks that inside the earth erupts through crater at the mouth so we know जदि हम एठी डायग्राम करी मु एठी भला भाबे देखो एठी जदि हम डायग्राम करछोंदी केमते रहइबो deep within the earth crust so normally this is break through एटा मु डायग्राम करछि तुम काउरी इजी रहइबो right this is your magma is coming out मु रेड कलर करछि तुम काउरी इजी रहइबो right magma is coming out right this is magma is coming out this is magma eruption of magma right eruption of magma this is eruption this is your mouth right mouth of volcano this is and this is your magma right this is your magma this is your asthenosphere this is called your
asthenosphere. This is normally asthenosphere. So एटी हम देखुछो एटा जानि कि रखो. This is called your asthenosphere. आउ एटा जदि देखबा, this is your conduit or pipe, volcanic pipe or conduit कहा जाए. Conduit or volcanic pipe, right? Conduit or volcanic pipe. या भीतर देखि कहूची लाभा जेतले बाहर को आसे लाभा accumulates here. एई जगह रे लाभा accumulate हेता है. So normally हमें कौन देखिले कि when molten rock है ना, your volcanic forms when the molten rock माने कि magma. Molten rock means your magma. इति कहउछ magma और मन रखो लाभा. magma टा देखो इतरे inside earth surface जदि concept wise देखो इतरे inside earth surface थाए that is called your magma. When it comes to the outer surface, it is known as your lava, right? So molten rock deep inside the earth through crater mouth, this molten lava gets accumulated and formed as volcanic mountains. है how समझने कौन से they formed as volcanic mountains, right? Example Mount Fujiyama. Mount Fujiyama टा कोठी अछि? Mount Fujiyama is in Japan, right? Mount Fujiyama, where it is placed? It is in Japan. मन रखो. Mount Fujiyama is in Japan, right? Same thing. Mount Vesuvius की कहि परिबो? एटा हम गोटे असाइनमेंट ले. Where is Mount Vesuvius? की मते कहि परिबो? Where is Mount Vesuvius? की कहि परिबो? एटा हम तुमको असाइनमेंट देली. Mount Vesuvius रो को कंट्री रे, which country मैं लिखि दउची हला as करी के मते त माने हला. I just want to know those who are serious students. Basically this सब जिंस जदि तुमको बहुत हेल्पफुल हो. Mount Vesuvius which country and यार importance कौन? Mount Vesuvius why it is important in history कौन पे यार importance अछि? I mean जदि हम देखबा geographical history, right? So volcanic mountain हम जाने. Even if जदि हम इंडिया जदि तुमने पचतु सर इंडिया तो कहीं किछ एग्जांपल देले. इंडिया जदि हम एग्जांपल दबा, इंडिया जदि volcanic mountain देखो, it is your barren island है ना. barren island रे अंडमान रे अछि. barren islands है ना. barren islands in Andamans. ठीक है जी. barren island in Andamans रे, this is an examples of volcanic mountain. barren islands, right? Okay. Next एडी सरला. नेक्स्ट जदि हम देखिबा आउ कोन इट इज योर एटा भी सरला. नेक्स्ट कम टू योर relict mountain. लास्ट वन इज योर relict mountain हैला. relict mountain. So normally relict माने कोन के मते कहि परे? What do you mean by the relict? relict रो माने कोन? We can say what do you mean by the relict? relict माने हैला अवशेषांश. माने normally we say it is your remains. relict means remains, right? remains माने जति के बड़ काछ we can say remains or अवशेषांश. So we can say relict mountain, right? So normally relict mountain जदि हम देखिबा कि एमानकर फॉर्मेशन बहुत आगुरु हेता. but with the passage of time एमाने धीरे धीरे एमानकर कोन हेता, with the passage of time their height get reduced. For example I can say आमे अरावली की कहि परबा इट्स एन relict mountain. अरावली गोटे टाइम रे हिमालय ठु बहुत ऊपर थिला, ऊंचा थिला. but now वर्तमान अरावली सेही समय जदि 11 किलोमीटर थिला, वर्तमान अरावली इट इज ओनली जदि देखियो तार एवरेज हाइट 700 to 800 meters. आउ जदि देखियो कि तार हाईएस्ट पीक दैट इज योर गुरु शिखर जोटा कि माउंट आबू रे अछि ओनली 1700 समथिंग मीटर, राइट? So normally relict mountain जदि हम देखियो इट्स अ पैसेज ऑफ टाइम. once upon a time जदि हम कहले अरावली वाज अ ग्रेटर हाइट, now अरावली comes to this height. This is the passage of time. relict means remains. Let us know relict माने हम जानले कि when mountains are subjected to heavy weathering, जितने heavy weathering होता है, mountains are subjected to heavy weathering, right? and erosion with the passage of time, है ना. समय माने passage of time अनुसार कौन हुए mountains they are subjected to heavy weathering and erosion, है ना. weathering और erosion होइकी their height they become shorten in height and maintain an average elevation. समानकर कौन हो height ता short हो जाए और they maintain an average elevation, right? good average elevation samane maintain karthan. For example if I say examples are the Vindhyan mountains in India and the Nilgiri mountains, right? Vindhya mountains and the Nilgiri mountains normal हैला बहुत बड़ो से हाइट रे थांती and the passage of time height and they maintain a average elevation. For example सेठी मु कहबी
कि erosion and passage of time. erosion माने कौन? weathering and erosion. weathering माने कौन? weathering means हमें जानते कि disintegration disintegration of rocks है खाली disintegration and decomposition हमें लिखो disintegration and decomposition, right? disintegration and decomposition of rocks हमें कहि पर that is called your weathering. weathering माने हैला dis हैला. सो वर्तमान हमें जति जानिबा कि बिंध्या को भी हमें नहीं परिबा एठी हैला. बिंध्या भी गोटे टाइम में जति देखो कि बिंध्यार एज मन रखो बिंध्या और आरावली रो एज ताला अधिका हैला. आरावली माउंटेन्स ए भी कैटेगरी रे जीवो. देन आरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन हैला. एनसीईआरटी जति तमे देखो कि आरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, राइट? सो नॉर्मली एमाने गोटे टाइम रे हमर हाइट जति देखियो जति आज की जति मैं कहबी कि 3500 मिलियन इयर्स वर्ष पूर्व आरावली हाइट की बिंध्यार हाइट 2000 मिलियन इयर्स पूर्व बिंध्यार बहुत अधिक था. बट वर्तमान एमानकर एवरेज हाइट 1 किलोमीटर तळो गला कुआडे माने मोर देन जति मु देखबी आरावली केस रे near about 10 kilometers has reduced. How? This is because of the weathering. ये weathering रा process ही आरावली रा height को reduce कर देछि. आउ बिंध्यार सेमति नीलगिरी जदि देखो नीलगिरी कोठी हमरो साउथ इंडिया माने इट इज एन जल्दी इट्स एन ट्राई जंक्शंस ऑफ योर तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका हैला. दिस इज द ट्राई जंक्शंस ऑफ योर नीलगिरी माउंटेन्स, राइट? So normally this is called the relic mountain. Relic mountain is the you see the diagram. So from the diagram it is you can see these are the it is these mountains they are getting shortened in height. It is height short hills है ना धीरे धीरे. It is how it happens. It is because of weathering. weathering रो agent की था weathering agent रे there are मन रखो weathering agents basically है ना weathering agents. it जल्दी देखो तो तमे agents of weathering पे लिखली agents of weathering की कहि परिबो. मु ऑलरेडी आ गोटे YouTube क्लास रे ऑलरेडी मु कहिछि कि वेदरिंग ऊपर हमें ऑलरेडी कथा हिचंती कि वेदरिंग रो एजेंट्स किए. नॉर्मली वेदरिंग रो एजेंट्स जदि हमें देखिबा कि वाटर विंड हैला वाटर विंड आउ ग्लेशियर हैला. ग्लेशियर जदि देखिबो को जगह रे ग्लेशियर्स माने नॉर्मली जदि तमे देखिबो कि हायर अल्टीट्यूड और हायर हैला लैटिट्यूड रे समय थांते. ग्लेशियर्स दे हैव फॉर्मड इन द हायर लैटिट्यूड कंट्रीज, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट जहां भी हमें जानले कि माउंटेन्स ऊपर हमें पढ़िले कि माउंटेन्स वैरायटी योर फोल्ड माउंटेन देन योर ब्लॉक माउंटेन देन योर डोम माउंटेन वॉल्केनिक एंड relic. क्विकली मुझे रिवाइज कर दोची. फोल्ड माउंटेन जदि तमे देखियो इट्स ए बेसिकली रिजल्टेड ऑफ द collision of the tectonic plates. For example, so your Indo-Australian plate with Eurasian plate, because of that collisions Himalayan fold mountains have formed. And basically mountains are they are narrow, width narrow and greater height, right? They are greater height, length, how narrow in width. So it हमें जानले anticline syncline folding केंति compressed की थाए. Next जदि देखियो block mountain जदि तमे देखुछो block mountain are basically when there is a compressional force, right? compressional force इधर absent थाए. normally इधर कौन थाए block mountain रे when there is an sudden force from the beneath हैला sudden force from the beneath. So what happens, one person lifted up गोटे पर्सन टा लिफ्टेड अप हो जाए अनदर पर्सन मूविंग डाउनवर्ड गोटे क्रस्टल एटी कोन डिसलोकेशन हो जाए जोटी के हम देखिले कि आर फॉर्मड व्हेन द फॉल्ट्स इन द अर्थ डिस्प्लेसेस ए लार्ज ब्लॉक्स अपवर्ड गोटे तळु जो फोर्स टा पड़ला एटी गोटे बहुत माने गोटे लार्ज ब्लॉक टा को ऊपर को उठे दो. एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस इस विंध्या संगे, राइट? विंध्यास माउंटेन सियरा नेवाडा यूएस रे जोटा हमें देखिले, राइट? आ सेटा को कोन कोन ब्लॉक माउंटेन माने हॉस्ट रिफ्ट वैली माने ग्रावेल हैला. दिस कुड बी ए क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स आल्सो, राइट? डोम माउंटेन्स में कौन देखले दिस आर द डोम माउंटेन्स बड़े बड़े कौन हुए magma eruptions जो हुए asthenospheric magma से without disturbing the earth crust or the earth surface it rises upward ऊपर को आसी जमाटो बनते, राइट? एक केस रे जेमति मु कहली डोम माउंटेन रा एग्जांपल चला यूएस रे कोठी हेनरी माउंटेन इन यूएस रो उटा स्टेट रे. सेम द वोल्केनिक माउंटेन्स रे कौन हुए when there is an accumulation of your magma, right? accumulation of magma it forms
your जदि देखिबो कि it forms a volcanic mountain जेमति फुजियामा कहली हला तुमको आ गोटे असाइनमेंट देथली कोन कि एठी कहबो कि माउंट वेसुवियस वर्ल्ड रो को जगह देखा वेयर इज माउंट वेसुवियस हला एठी भी आ गोटे तुमको देथली तुमको एठी भी देथली गोटे टैक्स देथली हला कि एटलास माउंटेन और आल्प्स माउंटेन वर्ल्ड रे को जगह देखा जांदी जेटा तुम माने आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर इन कमेंट बॉक्स में तुम पिन कर परिबो राइट और लास्ट वन जोटा मु आउथरे करछु लास्ट वन दैट इज योर relic mountain they are actually they are greater in heights but with the passage of time the heights are getting reduced examples the relic means your remains hela abosesaks jota कहते for example we can say the atlas mountain पे हम कहि पर right so जदि हमें देखिबा कि ए टाइप रो पढ़ाटा क्लास रे भी हमर बहुत जिंस वी हैव माने एक्सटेंसिवली वी हैव कवर्ड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक जदि देखिबो कि रिगार्डिंग दिस ज्योग्राफी ऑप्शनल्स राइट ज्योग्राफी ऑप्शनल्स को हम कहबी वी हैव ऑलरेडी ओडिशा सिविल्स रो वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट माने बैच हैव स्टार्टेड लास्ट फ्यू इयर्स हला योर 3-4 इयर्स अब चलची माने आई मीन एठी बैच रे ऑफलाइन बैच रे योर already PSC or UPSC दिटांग दिया होछ offline online batch already started from last 4 months your geography optionals and definitely it will be helpful बहुत सारा students को queries आसे and from last 10 जो 10 years 12 years भीतर जो भी successful students you can go to the channel and you can find it there 7978090972 is my number those who want to connect they can ping me those who are interested further GS super information they also GS batch has already started last 3 months ago and students are there I am only the focus at Odisha civils your quality enrichment right bartaman jemti test series mains ho to prelims ho sabu jinso we have started in a very disciplined way right so hope this sessions is your interesting and helpful for your for your enhancement of your knowledge base निश्चित रूपे पढ़ो भला भी एनसीईआरटी पढ़ो बहुत भला भी पढ़ो एनसीईआरटी जितने पढ़िबो तमरा क्लैरिटी आहुरी बढ़िया रहबो ओके सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हैव ए गुड डे हला आ पुणी देखा हबो विल मीट अगेन विथ योर इंटरेस्टिंग सेशंस अनदर इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया बढ़िया जिंस विल अगेन डिस्कस ओके जय जगन्नाथ थैंक यू सो मच थैंक यू हैव ए गुड डे थैंक यू